Welcome all dear students. In the previous lectures so far, we have discussed the reproduction in lower and higher plants. Our main focus was on reproduction in angiosperms, reproduction in flowering plants. We have completed our chapter number 1 of the State Board textbook. What we are beginning today is the second chapter according to the State Board HSC 12th textbook. The title of that chapter is Reproduction in Lower and Higher Animals. The equivalent of this in the NCERT textbook is Unit 6 of Standard 12th textbook. उसमें से Chapter 3 as well as Chapter 4 ये दोनों चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन स्टेट बोर्ड के इस एक चैप्टर के इक्विवेलेंट है. सो ये हम आज से पढ़ने जा रहे हैं एंड अगले कुछ दिनों में हम ये चैप्टर पूरा डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे. नाउ as we have always said, our focus will be to concentrate mainly on NEET and the NCERT oriented studies, ताकि नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम प्रिपेयर कर सके. साथ ही साथ बोर्ड वाला जो है वो निग्लेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अपना स्टेट बोर्ड का और नीट का एक तरीके से थोड़ा बैलेंस करते हुए हम इसका डिस्कशन पूरा करने जा रहे हैं. अब शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एनिमल्स से. बाय लोअर एनिमल्स व्हाट वी मीन इज एनिमल्स बिलोंगिंग टू सम ऑफ द मोर प्रिमिटिव फाइलम. जो पहले के कुछ फाइलम है, फाइलम सिंगुलर, फाइला प्लूरल. So some of the more primitive phyla means Porifera, Cnidaria. These animals evolved first. So in that sense they are the more primitive, they are the less evolved phyla. ऐसे कुछ फाइला में जो कि एवोल्यूशन के स्केल में थोड़े नीचे है, जिसमें आगे बहुत एवोल्यूशन होकर आज के ऑर्गेनिजम्स जो कॉमन दिखते हैं जैसे कॉर्डेट्स एंड सो ऑन बने हैं. तो इसके विपरीत अगेंस्ट दिस the older, the more primitive phyla, in these we sometimes get to see some forms of asexual reproduction. But otherwise, as a general rule, animals always show sexual reproduction. In the very beginning of this particular discussion, we had discussed some of the differences, and that time we had said that sexual reproduction is the rule in the case of animals. एनिमल्स में बहुत ही रेयरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है. तो जो वो रेयर कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ एग्जांपल्स है, वो हम देख लेते हैं. अब इसको कहने के लिए हम अमीबा कह सकते हैं, बट 5 किंगडम सिस्टम में अमीबा हैज बीन पुट अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, एंड सो इट विल नॉट बी वेरी करेक्ट टू कंसिडर रिप्रोडक्शन ऑफ अमीबा और पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम एटसेट्रा. लेकिन प्रोटिस्टा का तो हम अलग से रिप्रोडक्शन डिस्कस कर नहीं रहे हैं. तो हम यहाँ पे डिस्कशन में अमीबा, प्लाज्मोडियम वगैरह इनका भी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एक बार क्विकली देख लेंगे. सो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा undergo reproduction by a process which we call as binary fission. Binary fission because in this process the word binary means two and fission means splitting. So splitting into two equal daughter cells, that is called binary fission. इसमें होता ये है कि धीरे धीरे इस अमीबा के अंदर पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा. So that will go by regular mitosis. So of course not exactly like this, but the nucleus will start undergoing the regular mitosis process in which the membrane will disintegrate, chromosomes will start getting formed and so on. धीरे धीरे एक spindle apparatus भी बन जाएगा. Through metaphase they will come to lie in the center, and the attachment of the tubular fibers of the spindle apparatus will take place, and eventually दोनों तरफ एक एक अपना न्यूक्लियस नया बनना शुरू हो जाएगा.
धीरे धीरे इसके बाद साइटोप्लाज्म भी स्प्लिट अवे होना शुरू हो जाएगा. So you will find this becomes something like this, cytoplasm trying to separate out on both sides and eventually completely split होकर आपको एक सेल अलग और दूसरा डॉटर सेल भी अलग, ऐसे दो सेल्स में ये eventually split हो जाएगा. That is binary fission. Now sometimes what we see is we get a slight difference from this. So example is seen in Plasmodium. Plasmodium is the malaria causing organism. Plasmodium we know is the protist. It's a unicellular organism which is found in man as well as in mosquitoes. वहाँ से mosquitoes से इंसान की तरफ और इंसान से mosquito के थ्रू दूसरे और एक इंसान की तरफ ऐसे उसका ट्रांसमिशन होते रहता है. तो इसमें एक्चुअली मैन टू मस्कीटो, मस्कीटो टू मैन, मैन अगेन टू मस्कीटो, ये ट्रांसमिशन होते होते उसके बहुत सारे फॉर्म्स दिखते हैं. इंसानों में जो एक फॉर्म होता है, इंसानों के आरबीसी के अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन होता है. सो जस्ट लेट्स क्लियर दिस ओरिजिनल वन एंड लेट्स टॉक ऑफ दिस. ये एक सपोज आरबीसी है एंड यू नो दैट आरबीसी इज हैविंग a little biconcave shape. So ये इसका biconcave shape है. ऐसे में इसके अंदर इसके forms देखने को मिलते हैं and they multiply feeding on hemoglobin. As they are multiplying, they multiply by a process called multiple fission. Multiple fission में ये होगा कि एक individual cell और एक न्यूक्लियस, इसके दो हिस्से होने के बजाय इसके न्यूक्लियस के मल्टीपल कॉपीज भी बनना शुरू हो जाएगा और हर एक न्यूक्लियस का कॉपी थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेकर एक साथ मल्टीपल टुकड़ों में बट जाएगा. यू विल गेट मल्टीपल ऑफस्प्रिंग एट द सेम टाइम. दैट इज मल्टीपल फिशन. सो दिस इज ऑब्जर्व्ड इन प्लाज्मोडियम व्हिच कॉजेज मलेरिया. इसके अलावा कुछ और पिक्यूलियर फॉर्म्स. पैरामीशियम आपको मालूम है थोड़ा सा स्लिपर के जैसा शेप इसका होता है. इसको सिलिया होते हैं बहुत सारे एंड इट हैज टू न्यूक्लियाई, वन स्मॉल माइक्रो न्यूक्लियस एंड वन लार्ज मेगा न्यूक्लियस. इसका जब फिशन होगा तो इट ऑलवेज हैपेंस इन अ वर्टिकल डायरेक्शन. सो यू विल ऑलवेज गेट इट स्प्लिट इन वर्टिकल डायरेक्शन अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस लाइक दिस to produce both meganucleus, micronucleus and ciliated daughter cells. So ये vertical fission इस तरीके से इसी axis में, इसी direction में ही splitting दिखता है. Amoeba has no shape, so उसका binary fission कैसे भी हो सकता है. ये कुछ unicellular animals जो कि actually strictly speaking animals नहीं है, protists है, but अगर इनको animal माना जाए in a two kingdom system तो इनमें क्या method है वो देख लिया. अब इसके अलावा स्पंजेस में जो एक कॉमन मेथड है वो देख लेते हैं. इन द केस ऑफ स्पंजेस मींस फाइलम पोरिफेरा. फाइलम पोरिफेरा यू नो इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स लाइक साइकॉन एटसेट्रा, जिसमें हमारे को ऐसे देखने को मिलता है कि पानी के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है. ये ऑफ कोर्स टिपिकल एक पोरिफेरा है विद लॉट्स ऑफ ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम एंड सो ऑन. अब ये तालाब में या नदी में होता है. धीरे धीरे सपोज द लेक और पॉन्ड और रिवर और व्हाटएवर स्टार्ट्स ड्राइंग. सो द वेट सीजन, रेनी सीजन हैज गॉन पास्ट and dry season is approaching. So water has continuously gone on evaporating. So the water with some dissolved salts, मिट्टी वगैरह इसमें जो भी है, इसको लेकर धीरे धीरे वो थोड़ा पानी concentrated होना शुरू हो जाता है. As it starts sensing that the water is becoming more concentrated, osmolarity change it can detect and it starts realizing कि अभी conditions adverse हो रहे हैं. Dry season is approaching. ऐसे सिचुएशन में we find that it gets converted into a spherical structure in which there is a surrounding protective layer of a hardened substance that is created. Within this, a few spicules will remain, and inside this, some new cells are multiplied and they give rise to spore-like, they're not exactly spores, but spore-like small
structures which we call as gemmules. इनको अब हम कहते हैं gemmules. Gemmules and this kind of a ball of gemmules which is observed in the case of reproduction of sponges, ये asexually बना है, इसमें कोई gametes नहीं बने, कोई fertilization नहीं होने वाला, इसके अंदर multiple gemmules बनने वाले हैं. ये अब resistant structure है. Even if this lake completely dries, तो on the bed, on the bottom of this can survive even in dry conditions. And अगले साल की जब बारिश आ जाएगी और फिर से पानी यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा, at that time this structure will hatch, it will break. और ये जो protective covering है उसने इसको अभी protected रखा था, अब इसमें से ये gemmules release हो जाएंगे and they will serve like new spores and they will start growing into wherever they will fall, they will start growing into a new organism as a new individual. So this gemmule formation is seen in sponges. Then one more important, very commonly seen form is seen in the case of Hydra, Cnidaria. Hydra is a member of Cnidaria. आपको Hydra मालूम है कि ये इसको tentacles होते हैं और usually about 5 tentacles. मैं थोड़ा एक आध ज़्यादा बना गया हूँ, but कोई बात नहीं. अब यहाँ उसका hypostome और mouth वगैरह ये होता है with coelentron cavity. That's the typical Hydra structure. This you all know. इसके lower region में, usually towards the lower 1/3, somewhere towards its base, first a little outgrowth will be created. एक थोड़ा सा हल्का सा projection बन जाएगा. धीरे धीरे वो outgrowth थोड़ा बढ़ जाएगा. It will become a slightly larger bud, and then eventually it will start differentiating to form a few tentacles as well. By this time, now this has taken up the shape of a miniature hydra. Now it gets detached from the parent body, floats and falls somewhere and starts growing as a new individual. This way, from a outgrowth as a bud, a new individual has been created. So this can be referred to as budding. So Hydra में ऐसा budding देखने को मिल सकता है. साथ ही साथ Hydra में भी, but more particularly Dugacia. Dugacia is the name that we will use. The other books also call it as Planaria. So ये तो example था हमारा Hydra का budding का. Hydra के अंदर budding, budding. But Dugacia or Planaria, this is an example of platyhelminthes. So you know that Planaria is a free worm, not parasitic worm found in phylum Platyhelminthes. इसमें, but याद रखो, इसका NCERT के book के हिसाब से word, the name for this is Dugacia. So let's write that Dugesia. नीट के लिए इसको प्लेनेरिया मत बोलना, इसको ड्यूगेशिया बोलना. तो इसका रीजनरेशन पावर बहुत तगड़ा है. You cut it into 3 pieces, each piece will become a new individual. You cut it into 4 pieces, you will get 4 new individuals. But it can also pinch its body into 2 parts. It can break it up into 2 parts, and each part will develop the rest of the body, so that starting from one parent you can now have 2 individuals. So ये एक इस तरफ और ये दूसरा इस तरफ, 2 नए individuals बन गए, 1 से 2 हो गए. So this is behaving something like binary fission, but we won't call it binary fission क्योंकि ये multicellular organism है. So this can be referred to something like a fragmentation. 2 टुकड़ों में हो गया, fragments हो गए, और each fragment it developed into a new organism. ये हाइड्रा के मामले में भी हो सकता है. इसके भी अगर 2 टुकड़े किए तो bottom will develop the top and the top will develop the bottom, and you will get 2 new individual organisms. This way there are a few methods and few examples of asexual reproduction taking place in animals. But apart from this, the general rule in all animals, out of all we have more than 1 million species in animals, सभी में standard rule है sexual reproduction. It is very rare to come across asexual reproduction in animals. Just these few handful of typical examples are observed. Okay?
So with that, we can now then start focusing not on the lower animals but on the higher animals, in which, as far as our syllabus is concerned, our main focus area is human reproduction. So अब से आगे हमारा सारा discussion mainly human reproduction से related रहेगा. So let's put that as a title: human, HUMAN, human reproduction, REPRODUCTION, human reproduction. अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम इसके आगे डिटेल स्टडी करने जाएंगे. हमने इसके पहले फिजियोलॉजी में बाकी चैप्टर्स में कभी कभी अलग अलग सिस्टम्स की पढ़ाई की है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सो ऑन. तो किसी भी सिस्टम को जब हम स्टडी करते हैं तो हम पहले क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर्स. How do the different parts of that system, how the different organs of that system are present and what they look like. वो structures, morphology, ये पहले देख लेते हैं. उसमें कभी कभी कुछ कुछ important organs का microscopic structure, the microanatomy, ये भी देख लेते हैं. Then we come to functioning, how those different organs function. वो क्या क्या role play करते हैं, कौन से substances बनाएंगे या क्या उनका मेन फंक्शन रहेगा, ये सब हम देख लेते हैं. एंड देन समटाइम्स वी गो टू स्टडी व्हाट कैन गो रॉन्ग एंड डिजीज कंडीशंस एटसेट्रा. इस तरीके से हमने बहुत सारे ह्यूमन सिस्टम्स को स्टडी किया है. अब हम रिप्रोडक्शन सिस्टम जब स्टडी करेंगे तो भी ऐसा ही अप्रोच रख सकते हैं. पहले स्ट्रक्चर्स, सो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, followed by functions, physiology, followed by a little bit about what could go wrong and so on. That is reproductive health वाला part. But इसमें एक important difference है as compared to study of say digestive system या respiratory system. वो main important difference क्या है? तो digestive system, reproductive system, circulatory system, ये जितनी भी systems हैं, वो man and woman, male और female, दोनों में roughly similar है, hardly any difference, except maybe male heart थोड़ा बड़ा है, female heart थोड़ा छोटा है, but otherwise, as one example, but otherwise essentially there is hardly any difference. So, when it comes to reproductive system study, of course it is not going to be like that. The male reproductive structures are completely different, female reproductive structures are completely different. इनके structures अलग है, इनके functions और physiology भी अलग है. So obviously, when studying human reproduction, we will have to study it as male reproductive system and female reproductive system, both separately. So we will also have to study male physiology, female physiology. And then, since reproduction involves coming together of gametes and fertilization, तो मेल इंडिविजुअल के गैमीट्स फीमेल गैमीट के पास कैसे पहुंचेंगे, ये भी इसमें डिस्कस करना पड़ेगा. सो इन द केस ऑफ प्लांट्स वी हैड समथिंग लाइक पॉलिनेशन. इन द केस ऑफ एनिमल्स वी हैव मेटिंग एंड कॉपुलेशन, इंटरकोर्स. सो वी विल also have to talk of the transfer of the male gametes to the female side, and then the actual fertilization, and beyond fertilization, the development of a little baby. So going through stages of the embryo and fetus, a new young one has to be born. That is the pregnancy or gestation process. ये भी हमें कवर करना है. और gestation होकर childbirth होने के बाद a few early hours, इसमें कुछ important events जो है इनको भी देखना है. That will be our discussion of human reproduction. Together with that, reproductive health will also be a part of our study. Reproductive health में हम mainly ये देखेंगे कि reproductive system का काम है to produce new offspring. If we go on producing more and more offspring, then the population will increase excessively fast, and we may not be able to give sufficient care and nutrition and sufficiently take care of all the requirements of all this huge population.
So we need to limit the growth of population. We want to control the rate at which population grows. और ये करने के लिए we resort to what is called as contraception. Contraception is essentially methods to not allow pregnancy to take place. So ये क्या methods है, इनके पीछे का क्या logic है? And lastly, a few diseases associated with the reproductive system, what we generally call as sexually transmitted diseases, STDs. इनका कुछ important examples such as syphilis, gonorrhea, etc. and a little bit about their symptoms and so on. ये इस overall पूरे chapter का scope है. ये हमको इसके आगे अगले कुछ सेशंस में एक बाय एक धीरे धीरे करते जाना है. ऑब्वियसली हम शुरुआत करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, क्योंकि कंपैरेटिवली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शनिंग इज अ लिटिल ईजियर टू अंडरस्टैंड कंपैरेटिवली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और खास करके फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी involving a menstrual cycle is a little more complicated, is a little more difficult to understand. So ये easier वाला part, male वाला हम पहले देखते हैं, बाद में हम female reproductive system तक आ जाते हैं. So with that as an introduction about this chapter and so on, I would also like to start and mention over here in the very first session related to this chapter a little bit about the practical importance of this chapter. Practical in the sense कि वैसे तो थियोरेटिकली आपको सब कुछ पढ़ना तो है ही, बट एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि इस चैप्टर के लिए वेटेज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन नीट इज ऑलवेज क्वाइट हाई. सो यू मस्ट सर्टेनली नॉट मेक एनी कॉम्प्रोमाइज इन स्टडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. पूरे ध्यान से इसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ना चाहिए. स्टेट बोर्ड में इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स में काफी ज्यादा डिटेल्स दिए गए हैं. Compared to that, NCERT syllabus is not so detailed. NCERT syllabus is easier and less detailed. It is a little more limited as compared to state board syllabus for this chapter at least. So with that as my introduction, I am now going to start with the actual discussion of the human reproductive system, more particularly male reproductive system. Before we start actually seeing which structures are carrying out what function and how they look and all, we will first simply list out the main important structures in the male anatomy. Male reproductive system के main organs क्या है, उसके main components क्या है, इसकी सिर्फ एक simple list पहले बनाते हैं. उससे अपने को अपने आप एक idea आ जाता है कि इसमें क्या क्या main हमारा study और focus area रहेगा. So when studying reproductive system, reproduction and especially sexual reproduction के लिए हमने define किया है that fertilization of the gametes, fusion of gametes called fertilization is the most important defining process. So obviously gamete form करने वाले structures, those are the most important. So those we call as the primary organs, the main organs of this system. So the primary organ, Primary, primary organ, which means gamete formation, gamete forming. One which will give rise to gametes. This in the male is called as, you know this very well, this is called as testes. Testis is singular testis and Estes is plural. Individuals typically have a pair of testes and so we will write it as testes. ये main सबसे important structures है. The primary organs of the reproductive system are also called gonads, Gonads. The word gonads means those which will give rise to the gametes. Gamete forming structures are called gonads. In the male, it is the testes. In the female, it is the pair of ovaries. They are the gonads. Then, apart from the main or the primary structure, there will always be, or the primary organ, there will always be some other secondary
helping structures. So helping structures में we have one set of organs which we call as accessory duct system. Now duct means pipeline, tubes. Accessory means मदद करने वाले, additional. So additional मदद करने वाले tubes का system. This is very obvious because testes में जो sperms बनेंगे उनको motility होते हैं, they are flagellated, but they still have to be carried through a pipeline to be released from the testes to the outside in the body of the female to be placed in the vagina. तो इसके लिए एक pathway होना जरूरी है, एक tubes का system होना जरूरी है. Tube is not a technically correct word. समझने के लिए हम उसको small tube बोल सकते हैं, but the better word would be duct. And they are helping in the reproductive process. They themselves don't take part in the reproductive process because they are not producing the gamete. They are going to help to carry the gamete. So इसको हम कहते हैं accessory duct system. That is the next important thing that we'll be studying. And within this we will see there are many levels of the ducts such as retitestes and vasa efferentia and epididymis and so many others which we will come to shortly. And then, we also have a few important glands. Endocrine कभी-कभी होते हैं, कभी-कभी exocrine होते हैं. Reproductive system के ये endocrine glands नहीं है. Testes खुद एक endocrine structure है क्योंकि इसके अंदर testosterone produce करने का mechanism है. So this is partly endocrine, partly exocrine. But there are some other exocrine glands also whose secretions are not directly involved in fertilization, but they help the process. So they are also accessory. They are also the helpers of this system. So that we can call as the accessory glands. The primary gland is the testis. The accessory glands are the additional other glands. So accessory glands will also be studied. Of accessory glands में we have three sets or three different glands. So one of these, first one is seminal vesicle. As the name suggests, seminal means semen produce करने वाला. So vesicle or a gland-like structure producing semen, that is what its meaning will be. And that is quite a good word to use because almost 70% of the total semen is from the seminal vesicle. इसकी क्या peculiarities है हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, but अभी तो mention कर लेते हैं, first सिर्फ नाम लिख लेते हैं. Seminal vesicle, उसके बाद दूसरा जो important इसका accessory gland है उसका नाम है prostate. Prostate. Prostate is not paired. Seminal vesicle paired है, दो है, right seminal vesicle, second left one. But prostate is a single structure, approximately lemon-sized gland in the midline, एक ही है. And third part जो है, वो है what we call as bulbourethral glands, or also named after a person, and so also called Cowper's glands. Cowper's glands. ये तीनों के secretions, seminal vesicles, prostate और Cowper's gland, तीनों के secretions क्या-क्या रोल अदा करते हैं, उनका क्या importance है, वो भी थोड़ा आगे चल के देखेंगे. पहले हम, as we said, we are first just listing out the main structures. So to revise, primary organ is testes. The accessory duct system will include a pathway for the sperm, and it will include certain levels in that pathway, such as retitestes, vasa efferentia. After vasa efferentia, you have epididymis, then you have a vas deferens, which then joins with some outpourings or some tubes to give out the secretions of seminal vesicle to produce a structure called ejaculatory duct. Right side और left side के ejaculatory ducts midline में meet होते हैं, साथ ही साथ वो urethra में भी penetrate कर देते हैं, और वहां से आगे सारा pathway, it is through the urethra. So in the case of human male, we find that the pathway for urine after the bladder through urethra and pathway for sperms to be released, दोनों के लिए
पीनस वाला जो पार्ट है या इनफैक्ट प्रोस्टेट से लेकर the part of the urethra, that part is essentially going to be a common pathway for both. Apart from all of this, there are some parts which are visible outside, and that includes the external genitalia. So इसके आगे हम लिख सकते हैं, यहाँ जगह कम है, so fourth वाला point मैं यहाँ लिख रहा हूँ. We also have, apart from this, the genitalia external. So external genitalia इसको लिखते हैं EXTERNAL, external या exteriorly visible genitalia. LIA. External genitalia में scrotum in which the testes are present and penis which is the copulation organ, the organ for intercourse in a male. ये हम सारे स्ट्रक्चर्स की हो गई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम साइड पर लिस्टिंग. अब इंडिविजुअली इनमें से एक एक को लेकर हम एज वी गो अहेड इंडिविजुअली स्टडी करते जाएंगे, उनके क्या डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स है, क्या फंक्शंस है, एटसेट्रा. Although we will be studying female reproductive system a little later, in the first session as an introduction and as an overview, जैसे हमने मेल साइड के स्ट्रक्चर्स लिस्ट आउट किए हैं वैसे फीमेल साइड के स्ट्रक्चर्स भी लिस्ट आउट करते हैं. एंड वी विल फाइंड इसमें भी सिमिलर पैटर्न है. सो देयर आर सम प्राइमरी ऑर्गन्स, देयर आर सम एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया एज वेल. सो इनको अब हम देख लेते हैं. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. So human reproductive system इसको मेन करते हैं human reproductive system, and within that female reproductive system. अब female side के structures, organs in the female reproductive system, we'll just list them first. तो जैसे male side पे gonads which form the gametes were the most important, female side पे female gamete जिसको हम ovum कहते हैं उसको form करने वाला structure obviously वो भी important हो जाएगा. So यहाँ पे we have as gonads structures which we call as ovaries, paired structures, one on the right, one on the left. ये मेन फर्स्ट प्राइमरी ऑर्गन. सो लेट्स पुट दैट प्राइमरी को शॉर्ट में रोमन लेटर आई एक की तरह एंड विद अ जीरो ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. एग्जाम में मत यूज करना ये, बट वेयर वी हैव लेस टाइम एंड लेस स्पेस वी कैन राइट लाइक दिस प्राइमरी. सो प्राइमरी स्ट्रक्चर और प्राइमरी ऑर्गन इज द गोनाड्स. Gonads are also referred to as ovaries. Okay? Then you will have a duct system. अब ये याद रखिए कि फीमेल गैमीट या ओवम मोटाइल नहीं होता है. It can't swim on its own. उसको फॉरवर्ड प्रोपल्शन, उसको आगे धकेलने के लिए the structures which will be found after the ovary, the duct system, उसकी लाइनिंग को चारों तरफ से there are ciliated cells. Ciliated cells will keep on beating, will keep on bringing about a sort of swinging motion, and because of that whatever fluid is present in the neighborhood वो आगे push होता जाएगा. and abdomen के अंदर पेरिटोनियम वगैरह के अंदर fluid बिल्कुल है. so ये सारा fluid filled space ही है. so we find that in the oviduct you can get a little bit of fluid movement through which together with the fluid the ovum also moves. so that is what the duct system will be. This in that case we can then put as सबसे पहले तो oviduct, OVIDUCT. Ovi related to ovum, duct pipeline. So in simple words, a pipeline to carry the ovum. ये ovaries से लेकर ovum को uterus की तरफ ले जाएंगे. So the next important part will be uterus. Now uterus is of course not a duct. It is a very, very thickly muscular structure
बिकॉज इसके अंदर पूरी बेबी को बड़ा होकर at the end of pregnancy a significantly large size has to be achieved. So for that the uterus must have the ability to increase in size and then come back to normal as well. So ये uterus का important एक feature. Next उसके बाद आपके पास duct system में नहीं, duct system में तो इसके बाद और कुछ ज़्यादा important नहीं है. इसके बाद जो structures है those could be actually called as the external genitalia. So in that we can call or we can include the vagina and the covering of the vagina called hymen, which I will not write just now, and labia majora, labia minora and so on. So ये एक्चुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व स्ट्रक्चर है वेजाइना, इसलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड किया है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा. अब इन सबको एग्जाम के एंगल से कहाँ कैसे डिवाइड करना है वो मैं आपको नोट्स में दिखा दूंगा, वहां पे लिखवा दूंगा. बट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसका ग्रुपिंग ऐसे कर रहे हैं कि मेन गोनाड्स, देन डक्ट्स, ओविडक्ट एंड यूट्रस. Vagina onwards we are trying to put as the other external additional structures. And of course, we also have some accessory glands. So let's mention those also. Accessory glands. Accessory glands in the female will include one, what are called as bulbovaginal glands. These are along the lining of the vagina and its mucosa. Then bulbourethral glands. So towards the end of the vagina, towards the external side of the vagina, close to the opening, there are a pair of bulbourethral glands as well. And not related to the pubic area, not related to the genital area, but very, very important, we can also talk of mammary glands. In simple words, breast. अब ये याद रखिए, by definition, humans are mammals, and so mammary glands are also very, very important. So they are also a part of the study of the reproductive system. ये है हमारी listing of structures on the female side. इस तरीके से हमने मेल ऑर्गन्स, फीमेल ऑर्गन्स, एक ओवरव्यू लिया है, एक समरी लिया है. आगे के लेक्चर्स में मेल स्ट्रक्चर्स इन डिटेल पढ़ते जाएंगे, उसके बाद फीमेल स्ट्रक्चर्स इन डिटेल पढ़ते जाएंगे, फिर इनका फंक्शनिंग, हाउ दे वर्क, दैट आल्सो वी विल हैव अ लुक एट. And then of course other things like how they will be brought together, so the process of copulation, intercourse, and further fertilization and development beyond fertilization and other such topics we will start taking up. So यहाँ पे हम इस initial introductory session को stop कर सकते हैं. अगले सेशन में हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिस्क्रिप्शन से शुरुआत करेंगे. Thank you for listening to the lecture. Jai Hind.